Is the lecture notes visible to all of you? Please reply if your Yes, answer sir. is yes. Yes, Okay, sir. thank you. Thank you. So, good afternoon to all of you. We are going to discuss another concept known as combinatorics, and this course involves permutation combination type concepts, Eisenhower principle, derailment, combinatorics are combination with repetition, combination with repetitions, recurrence relation, Catalan's number, etc. This is a course for this section, and you will follow this book by Richard A. Bualdi, and you can find this book online through Google. You can easily download this book. The book name is Introductory Combinatorics. Please note down somewhere. And author is of this book is Richard A. Bualdi. So please note down somewhere. We can easily find this book through Google. PDF find. Please note down this book. So rigorously we follow this book for this section on combinatorics, that involve permutation combination and so on. So we will start with someone's microphone on. Please manage. Unknown. Roll number 6. Your microphone is on. Anu Singh. Please keep your microphone off. Thank you. Okay. So we'll start with some basic concept for combinatorics. And first we'll define the meaning of partition of any finite set. Suppose we have a finite non-empty set S, then a partition of, already we have discussed about partition of a set. I'm recalling this concept because we are going heavily to use in this combinatorics part. So I'm going to recall this concept of partition of any finite non-empty set. So suppose we have a finite non-empty set you call S, then a partition, any partition of S is a collection of pairwise disjoint non-empty subsets. I call subset S1, S2, S3, and so on, Sk of the set S, such that each element of S whole set is in exactly one of those subsets. That means if you take union of these subsets, non-empty subset, then we get the whole set S. And if you choose any two subsets from this collection of S1, S2, S3, and so on Sk, then intersection of any two members of this collection will get the empty. Member must be disjoint and indistinct, like S1, S2, they don't have a common element, S1, S3 don't have a common element, and so on. So if you choose any two members from this collection of S1, S2, S3, and Sk, then the intersection of those members must be an empty set. So any collection of subsets, non-empty collection of non-empty disjoint subsets, we call a partition if their union form a whole set. That is a meaning of a partition of any given finite non-empty set S. So we are, and see here, each member of the partition we call the block or part of the partition.
of the partition. Like here that means S1 is called block or part. Same thing S2, S3, S4. We can say blocks, either block or part of the partition. Now we have a very basic rule for combinatorics known as addition principle. I believe many of you know this concept of addition principle, not by name, but I think you people use in the your basic mathematics. So suppose what is your addition principle called? Suppose we have a finite non-empty set S, and that set S is partitioned in pairwise disjoint parts S1, S2, S3, and Sk. Then suppose you want to count the total number of the elements from the of a whole set S. Then what is the trick? You just count elements of S1, then element of S2, then element of S3, and so on. And then after the, because they are disjoint, so after that, counting the element from each SI, and then we'll take the sum of these SIs, size of SIs, then we'll get the total number of elements from the of the set S. That is the basic idea of counting known as addition principle. So I'm going to read out this concept of addition principle. Suppose that a non-empty finite set S is partitioned, is divided into pairwise disjoint parts we call S1, S2, S3, and so on, Sk. Then the total number of elements in the whole set S can be determined by finding the number of elements in each of the parts Si's and then adding the numbers so obtained. That means size of S is equal to size of S1. That is what is this is a notation for the kernelity of the set S. The kernelity of set S is same as kernelity of set S1 plus kernelity of set S2 and so on, kernelity of plus kernelity of set Sk. Because see, they are the disjoint subsets and their union is whole sets. That means if you want to count the element inside whole set S, then you just count elements in these smaller parts of S, and then after counting element from each SI, then we just add those elements, we'll get the total number of elements from the set S. That is the basic idea behind these ideas, behind this addition principle. And based on this addition principle, I just included some examples like example 1.0.2. And here, suppose we know that English alphabet, there are 26 in letters from A to Z. So based on this concept, we are going to ask that how many two-letter English words start with either letter A or letter B. See the question, how many two letters English word start with either letter A or letter B? Can you guess the answer? Anyone? Yeah, this So question is very 52. basic. How you get 52? So 26 letter, then A has 26 letter word and B has 26 letter words. Okay. And see those collection, whatever get you the collection is disjoint, totally disjoint. Because in the 26 letters, 26 words, letter A is the first element, and the another 26 letter words, B is the first in position. That means both word collection are disjoint. Then you can add those sizes.
So 26 plus 26 will get the 52. So I just write the same thing formally. To see the solution, I'm going to read out. Just first I note down that we have 26 letters in the English alphabet from A to Z. And first we determine two-letter English words which starts with letter A. So our first position on the left side, we put A, and the second position, because we are going to find two letters word. So at the second position from the left, we have 26 options. That means in this way we get the 26 words or two letters words which starts with the letter A. Similarly, next we are going to determine the two letters English words which start with the letter B. So at first position we put the B, first position from the left, and for the second position we have 26 options from A to Z. So that in this way we'll get the again 26 words, two letters word. That means 26 plus 26 will get the total 52 two letter words. That is your answer. Your answer is correct. Thank you. Now, same question. And in the next question, next example, I ask that how many two-letter words start with one of the 5 vowels? Can you guess the answer? So 130. How you get 2130? So each vowel have 26 word. Then 5 into Yeah, 26. good. Yes, thank you. So that means 26 in 26 plus 26 plus 26, 5 times, that they will get the 130. So I have written the solution. Please read out. Concept is very easy. I think you can. I believe that all of you can understand this solution part. What I did here. First, we determine two-letter English words which start with the vowel, because we have 5 vowels. All of you know that A, E, I, O, U, O. So first, we are going to determine two letters English words which start with the vowel A. That first position from left, your A is the first position, and B for second position we have 26 option. That means in this we'll get the 26 two-letter English words when your where A is the first position. When A is E is at the first position, again we'll get the 26 letters, 26 words. If your I, because third is the vowel is the I. So if I is your vowel, then because I is the vowel, where I is the vowel, we'll get again 26 two letters words. And similarly for O and U, that means 26 for 5 times. That means we'll get the, I've written the 26 plus 26 plus 26 5 times. That means 130. And also I write some example. Please read out. I don't think this concept is confusing. Now, we have another method known as multiplication principle. What this method say that, suppose that in making a list of length n, we are going to making a list of length n, there are m1 possible choices for the first entry from the left. When I say first entry, that means from the left. We are counting from the left. And see that what is your goal? Your goal is to make a list of length n. And suppose there are m1 possible choices for the first entry, m2 possible choices for the second entry, and so on. Finally, mk possible choices for the last kth entry. Then the total number of different lists that can be made this way is this product m1, because at the first position we have m1 option, the second position we have m2 option, and so on. In last position we have mk option. That means we'll get this much different lists
of length n, m1 into m2 into m3 into m4 and so on, mk. And based on this concept, we have several examples. I have write down, like see that. Suppose I'm going to ask this question, example 1.0.6, and here, suppose that you own 9 shirts and 5 pairs of pants. So can you tell me how many outfits can you make So if you have 45. 9? Huh? Which one? 45. How you get the 45, please? Sir, for each shirts, I have 5 pairs of pants. Then for 9 shirt, 5 pants. 9 into Yes, 5. good. Thank you. Same answer. See that, because you have two types of events. First, you have to select shirts and see for each shirt we have 5 options. So here there is two types of events for selecting shirts and also selecting the pants. So suppose we have selecting first pant shirt. For each shirt we have 5 options. That means, and we have 9 shirts, so 9 to 5 means 19 to 5 is 45. Suppose your first option is pint, though, so for each pint we have 9 shirts, so 5 into 9 again 95. That means in both way, which events you choose first and second doesn't matter. In both way you get the same answer, and your answer is 95. So in that 90, in 45, that means we can make 45 outfits using these 9 shirts and 5 pairs of pants. So same answer I've written here. Here we have two events: the first shirt selection and the second pant selection. The first event can happen in 9 ways, and the second event can happen in the 5 ways, and so the total number of outfits we can make is this much using multiplicative principle. And see, we have another question. Example I listed here. My question is that how many license plates can you make out of 3 English letters followed by the 3 numerical digits? Please tell me the answer. Question is very basic. Just I am going to recall everything. Yeah, I believe that these are the simplest to attend class questions. But just we are recalling every concept. How many license plates can you make out of 3 English letters followed by 3 numerical digits? Sir, 26 cube into 10 cube. 26Q into 10Q. How do you get this answer? Sir, 3 English digit, then 26 into 26 into 26, and 3 number 10 into 10 into 10. Good, yeah. That is your answer, correct answer. Thank you. So see, we know that 26 English letters are there in English alphabet, and we have 10 numeric digits from 0 to 9, because 0 is also a numeric digit. 0, 1, 2, 3, 4, and so on till 9. So that means we have 10 numeric digits, and we have 10 English letters. 26 English letters. See, what is your goal? We have to make the different license plates with 3 English letters, first 3 English letters followed by 3 numeric digits. So see that means here we have 6 events. Its first event, first place, we have to put the
English lecture. In the second position, we have to put the English lecture. At the first second means I am counting from the left. At first position, English lecture. At the second position, we put English lecture. At third position, we also put the English lecture. At the fourth position, we have to put the numeric digit. At fifth position, we have to put the numeric digit. And at sixth position, we also put the numeric digit. These three English lecture followed by three numeric digits. So see that at first position, because we are going to put only English lecture on the first position, and we have 26 English lectures. That means for first position we have 26 options. Similarly, for the second position, because we are going to put only English lecture on the second position, so for second position we have also have 26 options. Similarly, for third position, we have 26 options. But see that at fourth position, because at fourth position, we have to put only numeric digits, and we have only 10 numeric digits. That's why at the fourth position, we have only 10 options from 0 to 9. Similarly, we have at fifth position, we have only 10 options from 0 to 9. And also for sixth position, we have only 10 options, 0 to 9. That means for first to 10, so total number of different license plates we can make, and this is the number 26 into 26 into 26 3 times into 10 into 10 into 10 3 times. So that is your correct answer. Thank you. Just I write this same way. So this is your correct answer. And also we write down some example based on the same concept, multiplication principle. Now, see this question, example 1.0.10. My question is that suppose there is a group of people. Think about, I am talking about example 1.0.10. And suppose we have a group of people which consists of 5 men, 6 women, 2 boys, and 4 girls. So this data we have 5 men, 6 women, 2 boys, and 4 girls. This is a group in which 5 men, 6 women, 2 boys, and 4 girls are there. Now my question is that then how many ways one person can be selected from the group? How many ways one person can be selected from the group? Anyone? If you know the answer, please reply. Sir, 240. 240. How we get 240? So for each person, we can choose 5 times for men, 6 times for women, 2 boys, and 4 for girls. Then I multiply all of them. No, see, we have to choose only one person from this group. See the question, we have to choose only one person. Yes, sir. For one person, 240 ways. 240 ways. No, I Yes. don't. I don't think. The answer is correct.
यदि अपनी क्लासरूम में सपोज दैट आपके क्लासरूम में अराउंड 80 स्टूडेंट है टोटल, आई डोंट नो कितने एग्जैक्ट है, यदि हम कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आ जाओ, कोई एक स्टूडेंट आ जाओ, तो कितने तरीके से कोई आ सकता है बताओ? सपोज दैट आपके क्लास में 45 स्टूडेंट है मैथ के और 40 स्टूडेंट है सीएस के, और मैं कहता आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं कहता हूँ एक कोई आ जाए उठ के मेरे पास, तो कितने तरीके से कोई सेलेक्ट हो सकता है? जितना रहेगा उतना हो। जितना रहेगा उतने, तो कोई एक ही बार आएगा ना कि 5 बार आएगा बताओ? हमने कोई उठ रहा है मेरे पास आ जाओ, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, हमने कहा कोई मेरे पास उठ जाए तो कोई भी आ सकता है। आई एम नॉट पुटिंग एनी कंडीशन। यदि मैं पुट करूंगा सीएस का स्टूडेंट है तो वो 40 45 40 ऑप्शन होगा, पर मैं कहता हूँ कोई मैथ का स्टूडेंट कोई है तो 45 ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैं कोई उठ के आ जाए इस क्लास से तो कितने होंगे बताओ? कितने तरीके सेलेक्ट किया सकता है? 85 सर। 1 सर। 80 85। आप ऐसे सोचो, आपकी क्लास में 45 मैथ के स्टूडेंट है और 40 स्टूडेंट है सीएस के, और उस क्लास में से किसी एक को सेलेक्ट करना है मुझे, किसी एक को, तो कितने तरीका हो सकता है बताओ चूज करने का? किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई कंडीशन तो पुट नहीं किया गया है। तो एक ऑप्शन, एक भी किसी पर्सन के, कोई स्टूडेंट को चूज करने का कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज आई कैन चूज वन पर्सन? 1 यस, 3 हाउ मच? 85 सर। 85। तो जितने लोग हैं तो किसी को पढ़ के लग सकते हैं। दैट इज टोटल नंबर, कितने उस क्लास का स्ट्रेंथ है, उसमें से किसी को हम पकड़ लेंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज हाउ मेनी वेज वन पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप। सर इस एग्जांपल का आंसर 240 होगा। किसका? एग्जांपल 1010। कैसे बताओ? सर सभी में से एक को सिलेक्ट करना है, तो 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4। ये मल्टीप्लाई क्यों करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप देख लो, आप घर में, आपके घर में कितने लोग हैं? मान लो कि आपके घर में 4 मेल हो और 5 फीमेल हो, एज्यूम दैट, ठीक है, और मैं कहता हूं कि कोई आपके घर में से मेरे घर पे आ जाए, बात समझ रहे हो ना? आपके घर में 4 मेल है, आई डोंट नो कौन स्टूडेंट है, और 5 फीमेल हो, मैं कहता हूं कि मेरे घर पे कोई एक आदमी आ जाए, तो कितने तरीके से कोई आ सकता बताओ? एक ही आना है। सर 4 तरीके से। 4 तरीके से हो जाएगा बताओ? सर सर जितना 16 है तरीके से। जितना है। हम तो कंडीशन नहीं कर रहे कि मेल ही आएगा फीमेल आएगा, कोई भी आ सकता है। सर इसका 100 आंसर रहेगा तो 100। हाँ प्लीज। अगर 100 रहेगा तो 100, अगर 200 रहेगा तो 200, जितना रहेगा उतना तो बस। बहुत सही, बहुत सही। क्या नाम है जी आपका? पप्पू नाम है। हाँ, बहुत पप्पू जी, देखिए तो पप्पू बता रहे हैं, जितना है उतने तरीके से होएगा। आंसर 17 होगा। कितना? 17। हाउ वी गेट 17? सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन। Total number of person in the group, total number of person of this group. So 5 men is there, so 5 plus 6, 6, so means 5 plus 6 plus 2 plus 4. So 5 plus 6 are 11 plus 2, 13 plus 4, 17. So there are 17 ways for one person to be selected from this group. किसी एक को select करना है। और अगेन तो क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से आया, क्वेश्चन सेकंड छोड़ देते हैं, उसको आंसर करना है। Now see the question, what is the second part? Find the number of different subgroups
सब कुछ टर्म गलत है, दूसरा यूज करना पड़ेगा। सब कलेक्शन, रीड एज ए सब कलेक्शन ऑफ द दैट ग्रुप consisting of one man, one woman, one boy and one girl। ये आंसर तक बताओ तो दूसरे पार्ट का। सब ग्रुप का सर सब ये कलेक्शन। ये 240 वाला होगा। 240 होगा सर, वो पहला वाला मैं सोच गलत कर लिया था। इसमें हो जाए क्योंकि सबके सीधे एक चूज करना है, तो आपके पास टोटल 5 मैन है, उसमें से एक किसी मैन को चूज करना, तो 5 वाले के लिए 5 ऑप्शन होगा। एक ओमेन चूज करना है, अमाउंट 6 ओमेन, देन 6 ऑप्शन सेकंड पोजीशन के लिए हो जाएगा। थर्ड पोजीशन के बिकॉज 2 बॉयज है उसमें से एक ही चूज करना है, तो 2 बॉयज हो जाएगा, और 4 गर्ल्स है उसमें एक ही चूज करना है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। यानी 5 into 6 into 2 into 4, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आउटपुट आएगा वही इसका आंसर होगा। I think that is 240 unit. Now, can you tell me the answer of this question? Example 1.10.11. Determine the total number of positive divisors of this number. Number देखो 3.4, 3 power 4 into 5 square into 11 power 7 into 3 power 8। कोई बताए? सर 4 into 2 into 7 into 8। कैसे मिला 4 into 2 into 7 into 8? Please. सर क्योंकि सभी को उन्होंने प्राइम के पावर में रेस किया है, अच्छा। और जो है वो इनके फैक्टर में है, तो वो सबको डिवाइड कर सकते हैं। और जितने नंबर में, मतलब जितने मल्टीपल में वो प्राइम से वो उनके पावर में रेस किया गया है, 4 2 7 8। मैंने ऐसे सोचा। अच्छा, ये मैं इसको हटा दे, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं हम कि टेल मी द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ द नंबर ओनली 3 power 4। 3 power 4 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे बताओ। जस्ट ignoring these third 3 parts, 5 square 11 power 7 3 power 8, just I am putting for only one condition, you just give the total number of positive divisors of this number 3 power 4। जल्दी बताओ तो क्या क्या हो सकता है। 4 आंसर। हाँ, सर 5। 5 आ गया। 5। यहाँ 5 आ गया, कोई कह रहा तो 4 से हो जाएगा वहां पे। 4 ही ना होगा सर, हाँ, 4 ही ना होगा। अब ये तो 4 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये हम थोड़ी पूछ रहे हैं। क्या होगा मुझे वो चाहिए, क्या नहीं होगा हम थोड़ी पूछ रहे हैं। 4 होगा। चलिए अच्छी बात है, 4 होगा। कौन कौन होगा 4? 5। 4 कौन कौन होगा दोस्त? 3 9 27 81। अब 1 बेचारों को है ना छोड़ के रखे हो, दुश्मनी है क्या 1 के साथ? नो सर, हाँ, तो 1 भी डिवाइड नहीं होगा। करके क्या? हाँ, थोड़ा यस दिमाग सर, लगा, 1। जल्दी से थोड़ा दिमाग लगा करो। कोई कहोगे बाहर जाकर निकल मास्टर की डिग्री ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हो, कोई पकड़ लेगा। कोई छोटा बच्चा पूछ देगा तो कहेंगे सर 1 वाला छोड़ ही रहे हो। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। डिवाइजर कुछ इतना छोड़ा। सब सी दैट नाउ, सपोज इफ आई आस्क दैट टेल मी द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस नंबर 3 power 4 into 5 स्क्वायर, इसका बताओ तो। पंत या 15। कैसे है 5 या 15? पावर जितना है सर, उन दोनों को पावर में +1 करके ऐड कर, मतलब गुना कर देंगे। दोनों क्यों +1 करेंगे बताओ?
जिसने गुणा किया था उसको बता नहीं रहा क्यों करेंगे। सर 7 इसका आंसर होगा, हाँ 7 आंसर होगा इसका। सेवन करेगा। कौन कौन से यस सेवन होगा? सेवन कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सर, इसमें हो जाएगा 1 3 हाँ 27 9 और उसके बाद 81 और उसके बाद 5 और 25। 5 3 नहीं रहेगा, 5 और 25 सर। 3 नहीं रहेगा, यस सर, 3 भी रहेगा। 9 1 नहीं 3 रहेगा, 1 3 9 27 81 9 नहीं रहेगा, 5 और 25 हाँ ये सब रहेगा 15 नहीं रहेगा, सर। हाँ 15 भी रहेगा। 45 नहीं रहेगा। यस सर। तो डिवीजन भी नहीं ढूंढ पा रहे आप। डिग्री ही डाउटफुल है। सर ऐसे जा सकते हैं क्या? कैसे? जैसे कोई हाँ भी एक हाँ, प्राइम्स में रेस कर दिया, p पावर n1 p2 पावर n2 करके रेस कर दिया, ये तो नीचे वाला जो बेस तो तो प्राइम है ही है, जो बेस वाला जो प्राइम, इसलिए प्राइम नीचे रखे हैं। यदि प्राइम नहीं दे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। जो बेस नहीं है वो नहीं कह रहा हूँ सर, वो प्राइम ही नंबर है। यहाँ पर जो बेस है वो नहीं कह रहा हूँ सर, तो फिर उनका 7 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नहीं कंपोजिट है तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, तो जानबूझ के हम प्राइम रखे हुए हैं। लेवल ऑफ वो नहीं कह रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग। सर, तो देखिए कोई भैया अभी जाके ज्वाइन कर रहे हैं। सर सुजीत जो उनका कुमार, पावर है n1 n2 उनको मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे तो करो तो कितना आ रहा है? देखो तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। सर जो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ 4 लिखा ना, 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, हाँ। ये सब इसके इनको मल्टीप्लाई कर दो और +1 क्योंकि 1 भी एक्स्ट्रा डिवाइड करेगा, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हो? कोई मेथड है? क्यों मल्टीप्लाई करना हाँ चाहते मैं ऐसे मतलब बेसिक से ऐसे जा रहा हूँ सर, जैसे हो? नहीं, p1 जाने का पावर n1 तरीका भी p2 है। यानी दोस्त, जाने का तरीका भी तो है। रास्ता होगा नहीं चल दोगे, पता तो होना चाहिए क्यों चल रहे हो उस रास्ते पे, वो रास्ता है कि नहीं है, ये चलना शुरू कर दोगे। सर वही कह रहा हूँ मैं हाँ, सर 15 है सर। वैसे सर। मैथमेटिक्स में एक स्टेप भी आदमी चलता है तो सोच लेता है कि यार तरीका है क्या ये चलने का। इसीलिए मैथमेटिक्स से लोग डरता है, दूसरे सब्जेक्ट से नहीं। उसका एक स्टेप भी चलने में आदमी डरता है, क्या तरीका है क्या, किस लॉ सर से स्टेप लिए हैं, हम बताओ। सर अगर किसी भी प्राइम का पावर रेस करे तो उसका जो पावर होता है उसका +1 जो डिवाइजर होता है सर। देखो यहाँ पे मत देखो, यदि हम पहले वाला पार्ट लेते हैं 3 पर 4, ठीक है, दूसरा पार्ट को छोड़ देते हैं। 4 पार्ट हमने इवॉल्व किया जानबूझ के, और छोटा करना चाहिए था। 3 पर 4 ही लेते हैं एलिमेंट नंबर, और कहते हैं इसके सभी पॉजिटिव डिवाइजर मुझे बताओ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 3 पावर 0 काम करेगा, दैट इज 1, डिवाइड करने वाला है। 3 पावर 1 दूसरा एलिमेंट होगा जो उसको डिवाइड करेगा। 3 का पावर 2 वो डिवाइड करेगा। 3 पावर 3 डिवाइड करेगा, कहा गया 3 पावर 4 ये डिवाइड करेगा। 3 पावर 5 नहीं डिवाइड करना है। तो ऑप्शन देखो जो पावर वाले हैं, 0, यदि 3 का पावर 0 करोगे तो 0 एक ऑप्शन मिल रहा है जो उसको डिवाइड कर देगा। दूसरा पावर 1, 3 पावर 1 वो भी डिवाइड कर दे रहा है। 3 पावर 2 करोगे तो भी डिवाइड कर रहा है। 3 पावर 3 डिवाइड पावर करो तो भी डिवाइड कर दे रहा है। और 3 पावर 4 करोगे तो भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि ठीक है, कितने पावर करने पे, कितने पॉसिबिलिटी है पावर करने पे को डिवाइजर मिल जाएगा, 0 से लेके 4 तक। 0, 3 का पावर 0 करो तभी वो डिवाइड करने वाला 3 पावर 4 को।
पावर 1 करोगे तभी डिवाइड करेगा, पावर 2 करोगे तभी डिवाइड करेगा, पावर 3 करोगे तभी डिवाइड करेगा, पावर 4 करोगे तभी डिवाइड करेगा। यानी कि 3 पावर 4 के डिवाइजर मिलेंगे, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 ओनली। दैट मींस इस तरीके से उसको 5 डिवाइजर मिलेंगे 3 पावर 4 के। और शुरू कहां से हो रहा है? 0 से, 3 का पावर 0 से लेकर 0 3 पावर 4 तक हो रहा है। यानी कि पावर में कितने ऑप्शन है? 3 के 5 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी 3 के 5 ऑप्शन आ रहे हैं पावर के डिवाइजर मिलने के लिए। नाउ सीधे इस तरह 5 आपको मिल गया डिवाइजर 3 पावर 4 का। इस प्रोडक्ट पे देखते हैं, 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर पे देखते हैं, तो सी थिंक अबाउट, अलग से जोड़ लो 5 स्क्वायर के सर उसका 17 होगा। 1 मिनट प्लीज। तो 5 स्क्वायर को देखो कौन कौन से डिवाइजर मिलेंगे। तो 5 स्क्वायर के लिए 5 और 0 करोगे तभी डिवाइजर मिल जाएगा, क्योंकि 1 5 और 0 1 5 स्क्वायर को डिवाइड करने वाला है। और 5 और 1 करोगे तभी डिवाइड करेगा, 5 हो जाएगा। और 5 स्क्वायर करोगे तभी 5 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यानी कि 5 पे 3 तरीके का पावर काम कर रहा है, 0 पावर काम कर रहा है, 1 पावर काम कर रहा है, 2 पावर काम कर रहा है, ओनली 3 ऑप्शन। तो पावर 5 के 3 ऑप्शन मिल रहा है पावर बनाने पे, 0 1 2। 3 पे मिल रहा है आपके 5, तो 5 यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, यानी फर्स्ट इवेंट में 5 ऑप्शन काम कर रहा है, और दूसरे का ऑप्शन काम कर रहा है 3, 5 into 3, यानी टोटल सॉरी 5 into 3 मुझे लगता है 15 पॉजिटिव डिवाइजर मिलेगा 3 पावर 5 3 पावर 4 into 5 स्क्वायर। और देख लो ध्यान से, not only add 3 power 5 plus 3 is 8, 5 3 8, मुझे लगता है 5 3 plus 8 होना चाहिए। बाय द वन, तो 5 इसके आसपास मिले, 3 इसमें मिले। तो देखो ध्यान से काउंट करोगे कौन कौन से, देखो आपके पास 1 मिल रहा है, यदि इसको काउंट करोगे ऐसे 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर है, तो हम काउंट करें कौन कौन से डिवाइजर मुझे दिख रहा है, कहीं राइट डाउन करते रहो। 1 मिला वाला 1, छोटे शुरू करें 1 3 5 9 15 15 25 25 के बाद क्या दिखेगा आपको बताएगा क्या? 45 75 एंड शो ऑन। देखो कितने आ रहा है, सब लिस्ट करो, आपको मिलेगा टोटल आपके पास 15 डिवाइजर मिलेंगे, पॉजिटिव डिवाइजर मिलेंगे। और इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से आसानी से गेस कर सकते हो, और हमने प्रूफ लिखा भी है, तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे किस तरह से ये मेथड काम करता है। Because we don't have enough time, so just going to show the solution. So see here, the base elements are the only prime, 3 5 11 30 are prime numbers. So जो भी इसके डिवाइजर आएंगे इस नंबर के, उस डिवाइजर की ये फॉर्म होने वाला है। जो इसके पॉजिटिव डिवाइजर आएंगे इस नंबर का, वो इसी फॉर्म करेंगे, जहां पे आई का मोमेंट 0 से लेकर 4 तक रहेगा, जे का जो मोमेंट रहेगा 0 से लेकर 2 तक रहेगा, के का मोमेंट 0 से लेकर 7 तक रहेगा, लीस्ट एलिमेंट 0 है और 7 तक जा रहा है, क्योंकि 7 तक जाना चाहिए आपको, और एल का ऑप्शन 0 से लेकर 8 तक रहेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आई जो है 5 तरीके से फिलअप किया जा सकता है, जे 3 तरीके से फिलअप किया जा सकता है, के 8 तरीके से फिलअप किया जा सकता है, और एल 9 तरीके से फिलअप किया जा सकता है। इस तरीके से आपको मिलेगा, जस्ट बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल विल गेट 5 into 3 into 8 into 9 way to find the total number of positive divisor of this number. So this is nothing but 1080. Now उसके बाद क्या है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड ये भी क्वेश्चन रिपीट है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को।
So up to that, some question I have written that. Now come to the we don't have enough time. So again, we call it subtraction principle. This is another principle, basic principle, and this method say that suppose we have finite non-empty set, and we have another set U, which is a larger finite set that containing S, and here in this case we call the universal set for S. Then we'll define this new set S bar, and this is the collection of all those elements from the A U which is not inside S, and this S bar we call the complement of S in U. And if you want to count the size of S, this is nothing but size of U minus size of S complement. And one minute. See, this example, that in example interesting, example 1.0.15. Suppose we have question that suppose that computer passwords are to be consist of a string of 6 symbols taken from the digit from 0 to 9 and the lowercase English letters from A to Z. Think about, we have to create password using 6 symbols coming from the digit from 0 to 9 and lowercase English letter from A to Z. So this is a supply. From here we can use this letter or that letters from 0 to 9, and you have to make the 6 length computer password. Then my question is that how many computer password can be created? Anyone? क्या है Yes. सर? कह रहे हैं लोअर केस दिया है, लोअर केस मतलब लोअर केस लेटर मीन्स ये होता है कि जो स्मॉल ए बी सी डी होता है ना, दो तरह के इंग्लिश लेटर होता है, कैपिटल वाला होता है कि स्मॉल लेटर वाला। जी जी तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों यूज करोगे तो बहुत सारे इंग्लिश लेटर हो जाएगा, 26 प्लस 26 दोनों डबल हो जाएंगे, इसलिए हमने कहा लोअर केस लेटर। सो स्मॉल वाले इंग्लिश होता है ना, ए बी सी डी जेड तक, जी सर। हाँ उसको हम करें। So my question is how many computers password can be created? सर 36C6 क्या? कह रहे हैं 36C6 36 C6 ये क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला नहीं लगाते हैं सी और पी, वही सी कह रहे हैं। क्या इसका है, क्या मतलब क्या, मैं समझ नहीं। मतलब 36 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैसे है, ये कैसे है, लगे कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर, कैसे मिला ये? सर जैसे 12 में हम लोग पढ़े हैं, हाँ हाँ यहाँ से दिया है 10 तो डिलीट हो गया, हाँ
012 हाँ और 26 है ये पूरा हाँ मेरा हो गया 36। गुड। हाँ अब 36 में से केवल हमको 6 लेना है। 36 में 6 ही लेना। हाँ 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 हाँ। जी तो और कोई भी 36 6 लेना है, कोई भी 6 लेना है। जी तो हाँ 36 सी और 6 हो जाएगा। हाँ, इसमें रिपीटिशन भी हो जाए, ऐसा नहीं कि हम ABCD लेंगे, एक को भी 6 बार लिख सकते हैं। जी सर जी। हाँ सर 36 to the power 6। जैसे इस पावर से वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन। 6 चूज करना है तो स्पेशल एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता क्या? पासवर्ड जनरेट करते हो नहीं कोई ट्रिपल एस लिख देता है, ये 3 टाइम्स लिख सकता है पासवर्ड बनाते समय। अब वो कैसे पासवर्ड जनरेट करते, इसीलिए पकड़े जाते, इसीलिए साइबर अटैक को होता है। तो आपको आइडिया नहीं है कि लोअर केस लेटर कौन सा होता है, कैपिटल लेटर कौन सा होता है, फिर कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो सी दैट आपके पास टोटल आपको डिजिट मिल रहा है, क्योंकि सी वी हैव 10 numeric digits from 0 to 9. So we have 10 numeric digits and we have also 26 lowercase English letters. That means we have 36 options and you have to create a password of length 6. So see that means we have to fill up all 6 options, 6 position. At first position means from the left, with 6 लेंथ का आपको पासवर्ड चाहिए, एंड आप पहले पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन इज फ्रॉम द लेफ्ट, देन फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 36, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ नो सर 36। हाँ, और सेम थिंग on the for the second position also we have same option because repetition is allowed. I'm not restricting that कि जो पहला पोजीशन पे पासवर्ड जो डिजिट आपने यूज कर दिया है वो दूसरे पोजीशन पे नहीं आने वाला। So for the first position we have 36 option. Similarly for the second position again we have the 36 option, and also for the third position we have 36 option, and so on, and the last position we have 36 option. Then use the multiplicative principle, 36 into 36 6 times, because we have only to fill up the 6th position. That means 36 into 36 6 times, that means 36 and something 36 power 6. That is your answer, correct answer. इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। आप पढ़े हो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो पढ़े हो उसको कहीं यूज कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्यूटर पर्सन हैव ए रिपीटेड सिंबल? ये बताओ। इतने कितने पासवर्ड मिलेंगे आपको बने हुए जिसमें कम से कम एक सिंबल रिपीट हो रहा है? सर 36 to the power 6 minus 36 P6 परमुटेशन यूज होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए तो वो कैसे मिला बताओ? सर क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि कितने पासवर्ड जो है रिपीटेड नहीं है, यार तो 36 to the power 6 minus 36 P6 होगा सर। Yes. Now see that आप वो choose करो कि 36 आपको, yes, good, thank you. So that is your answer. Now your time is over. So I'm going to close today lecture. So we'll continue our lecture in the next meeting. Then we have division principle and so on. Okay, till that, thank you everyone for today lecture.